डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ ए लाइन का कह जाए जदि गोटे लाइन ओरिजिन रो पी पॉइंट दे पास करछे एवं लाइन टे एक्स कोऑर्डिनेट सहित अल्फा डिग्री एंगल बनाउछे एवं वाई कोऑर्डिनेट सहित बीटा डिग्री एंगल बनाउछे एवं जेड कोऑर्डिनेट सहित गामा एंगल बनाउछे ताले cos अल्फा एवं cos बीटा एवं cos गामा को डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ द लाइन कह जो एवं cos अल्फा को हमें L द्वारा डिनोटेड करा जाए एवं cos बीटा को M द्वारा एवं cos गामा को N द्वारा डिनोटेड करा जाए। तो डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ ए लाइन इज L M N। तो x एक्सिस रो डायरेक्शन कोसाइन कौन होबो तो अल्फा 0 डिग्री होबो तो cos 0 इज 1 बीटा 90 डिग्री होबो कारण x एक्सिस से तो y एक्सिस रो एंगल होची 90 डिग्री से बली z एक्सिस रो x एक्सिस से तो एंगल होची 90 डिग्री तो cos बीटा अब 90 डिग्री गामा अब 90 डिग्री तो cos 90 is 0 cos 90 is 0 तो बीटा cos बीटा cos गामा 0 cos अल्फा अब 1 तो डायरेक्शन कोसाइन्स of x axis will be 1 0 0 से बली y axis रो डायरेक्शन कोसाइन्स कौन होबो 0 1 0 एवं z एक्सिस रो 0 0 1 एवं डायरेक्शन कोसाइन को हमें d c ऑफ s लिखो एको डायरेक्शन कोसाइन को एबली मध्य डिनोटेड करा जाए। नेक्स्ट होची जदी हमें गोटे लाइन नेले o टू p जदी हमें p पॉइंट रो y कोऑर्डिनेट सहित गोटे परपेंडिकुलर ड्रा करिवा n और p रो कोऑर्डिनेट्स नवा x1 y1 z1 एवं डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ p विल डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ op भी l m n एवं op को जदी हमें r नेले op रो लेंथ को ताले on केते हबो जेतो हमें p रो परपेंडिकुलर ड्रा करछे y एक्सिस से तो ताले on y1 हबो तो cos बीटा कोन हबो cos बीटा m is equal to on by op base by hypotenuse तो base by hypotenuse होची और y1 by r तो y1 by r हला cos बीटा बा m is equal to y1 by r। सिमिलरली यदि हमें x एक्सिस सहित परपेंडिकुलर ड्रा करिवा तले हमको मिलियो l is equal to x1 by r एवं यदि z एक्सिस सहित परपेंडिकुलर ड्रा करिवा तले n is equal to z1 by r। तबे जदि हमें तीनटा जाक डायरेक्शन कोसाइन रो स्क्वायर को मिसेबा तले l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू x1 रो स्क्वायर बाय r स्क्वायर प्लस y1 रो स्क्वायर बाय r स्क्वायर प्लस z1 रो स्क्वायर बाय r स्क्वायर तो डिनोमिनेटर रे r स्क्वायर रहला तो एलसीएम r स्क्वायर एवं x1 रो स्क्वायर प्लस y1 रो स्क्वायर प्लस z1 रो स्क्वायर
तो x1 रो स्क्वायर y1 रो स्क्वायर z1 रो स्क्वायर कौन हम r रो स्क्वायर हम कारण आगे देखते ओपी डिस्टेंस फॉर्मूला रे ओपी इज इक्वल टू रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर तो ओपी रो स्क्वायर इज इक्वल टू x1 रो स्क्वायर प्लस y1 रो स्क्वायर प्लस z1 रो स्क्वायर तो x1 रो स्क्वायर y1 रो स्क्वायर प्लस z1 रो स्क्वायर ओपी रो स्क्वायर ओपी अच्छे r तो r रो स्क्वायर बाई r रो स्क्वायर इज इक्वल टू 1 तो l रो स्क्वायर m रो स्क्वायर प्लस n रो स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर बाई r स्क्वायर इज इक्वल टू 1 तो डायरेक्शन कोसाइन क्रॉस स्क्वायर को जदि हम मिसेबा cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 the direction ratio of a line direction ratio of a line देखिए पूर्व हमें direction cosine of a line रे कौन दिखते ले L is equal to x by r एवं m is equal to y by r एवं z n is equal to z by r तो r is equal to x by l एवं r is equal to y by m r is equal to z by n that implies x by l is equal to r y by m is equal to also r एवं z by n is equal to also r तो x by l is equal to y by m is equal to z by n is equal to r तो हमें l m n होची डायरेक्शन कोसाइन्स एवं x y z होची कोऑर्डिनेट्स रो वैल्यू तो जदि हमें x जगह 2x भी नेले 2y भी नेले 2z भी नेले तो 2r है जीवो किंतु 2x by l is equal to 2y by m is equal to 2z by n रो तो यह को डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन को जाए तो यह को हमें x y z नने के a b c नहीं जाए तो ये जेतु एवडा रो गोटे कांस्टेंट नहीं गोटे लाइन रो कोनोसी भी पॉइंट रो वैल्यू होई पारे तो सेति पे को हमें a by l is equal to b by m is equal to c by n नो एवं r को हमें कांस्टेंट k नवा तो गोटे लाइन रो डायरेक्शन कोसाइन्स होची lmn और डायरेक्शन रेशियोस होची abc ताले तब हम मिलेला a by l is equal to b by m is equal to c by n is equal to k तो a by l is equal to k that implies a is equal to l into k similarly b is equal to m into k and c is equal to n into k and a squared is equal to l squared k squared similarly b squared is equal to m squared k squared and c squared is equal to n squared k squared तो यदि अब हमें a squared plus b squared plus c squared नवा बाय तीनटा जा इक्वेशन को हमें मिसाई दबा ताले a squared plus b squared plus c squared is equal to k squared
कॉमन बाहर जीवो l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर हम किंतु l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 1 कारण cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 हम आगु डायरेक्शन कोसाइंस रे प्रूव करथिले तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर is equal to k squared. So that implies k is equal to root of a squared plus b squared plus c squared. तो k रो वैल्यू हमको मिलियला root of a squared plus b squared plus c squared. तो a by l is equal to k. तो l is equal to कौन हो यदि k रो वैल्यू हमें इक्वेशन रे पुट करिवा ताले l रो वैल्यू कौन मिलियो हमको a by k এবং k ର value होची root of a squared plus b squared plus c squared. Similarly यदि b by m is equal to k equation रे हमें k ର value put करिवा ताले हमको m is equal to कौन मिलियो b by root of a squared plus b squared plus c squared এবং n is equal to c by a squared plus b squared plus c squared. तो यदि हमको डायरेक्शन रेशियोस दे देछे a b c रो वैल्यू दे देछे त सेथरो हमें ए फार्मूला यूज करके डायरेक्शन कोसाइंस बाहर कर परिबा. तो thus if a b c are the direction ratio of a line, then the direction cosines of the line are a by root of a square plus b square plus c squared এবং b by root of a squared plus b squared plus c squared and c by root of a squared plus b squared plus c squared. And suppose हमको दुईटा पॉइंट दे देछे एटा होची p x जार कोऑर्डिनेट्स होची x1 y1 z1 एवं आउट पॉइंट होची q जार कोऑर्डिनेट्स होची x2 y2 एंड z2. तो हमको आर डायरेक्शन रेशियो बाहर करियर अछि. तो डायरेक्शन रेशियो केमिति बाहर करबा जेतेबेले दुईटा पॉइंट दे देछे. तो फर्स्ट p पॉइंट रो हमें गोटे परपेंडिकुलर ड्रा करबा y एक्सिस सहित एवं q रो आ गोटे परपेंडिकुलर ड्रा करबा y एक्सिस सहित. तो pm परपेंडिकुलर होचे y एक्सिस सहित p पॉइंट रो y एक्सिस सहित परपेंडिकुलर से बेले qn होचे q पॉइंट रो y oy जो परपेंडिकुलर qn से बेले हमें p पॉइंट रो जदी गोटे पैरेलल लाइन ड्रा करबा y एक्सिस सहित ताले एवं ए पॉइंट को जदी हमें नेबा r नबा ताले एवं जेतु pr पैरेलल अछि oy सहित तो pq जो एंगल रे y एक्सिस को इंटरसेक्ट करियो से एंगल रे ही pr को भी इंटरसेक्ट करियो. तो एंगल टी हैला बीटा कारण pq y एक्सिस को बीटा एंगल रे इंटरसेक्ट करछे. तो एंगल rpq इज बीटा
जेहेतु p रो कोऑर्डिनेट्स होची x1 y1 z1 तो o m केते हबो y1 सिमिलरली o n हबो y2 एवं n m केते हबो y2 minus y1 similarly pr is equal to nm तो pr is equal to nm तो pr is equal to also y2 minus y1 तो cos beta कौन हबो cos beta is equal to base by hypotenuse तो base होची pr by pq तो that implies cos beta is equal to pr होची y2 minus y1 by pq सिमिलरली जदि आमे p और q पॉइंट रो x एक्सिस सहित परपेंडिकुलर ड्रा करियो ताले हमको cos alpha is equal to x2 minus x1 by pq मिलियो एवं जदि z एक्सिस सहित परपेंडिकुलर ड्रा करियो pq पॉइंट रो ताले cos gamma is equal to z2 minus z1 by pq मिलियो तो हमारा डायरेक्शन कोसाइंस का मिलला thus the direction cosines of line PQ of the line PQ are x2 minus x1 by PQ and y2 minus y1 by PQ and z2 minus z1 by PQ जेहेतु cos alpha is equal to x2 minus x1 by pq तो cos alpha is proportional to x2 minus x1 तो हम x2 minus x1 को डायरेक्शन रेशियो कोई परिवा से बड़ी y2 minus y1 को डायरेक्शन रेशियो एवं z2 minus z1 को हमें डायरेक्शन रेशियो बा abc नहीं परिवा तो since 3 numbers x2 minus x1 and y2 minus y1 and z2 minus z1 are proportional to above direction cosines. So they are the directions ratios of the line. So they are the direction ratio of the line passing through the points x1, y1, z1 and x2, y2, z2 are x2 minus x1 and y2 minus y1 and z2 minus z1 तो हमको जदि गोटे लाइन रो दुटा पॉइंट दिया जायछि बा दुटा पॉइंट रो कोऑर्डिनेट्स दिया जायछि तो हमें तार डायरेक्शन रेशियो बाहर कर परियो x2 minus x1 y2 minus y1 एवं z2 minus z1 करके एवं ए डायरेक्शन रेशियो को यूज करके हमें डायरेक्शन कोसाइन भी बाहर कर परियो।